ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲಾಹಲ, ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮೌನ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಲವರ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸದನದ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಭಾಷಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಜೋರಾಯಿತು. ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಭಾಷಣ ಆದಮೇಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರು. मैं बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें. अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे. हाँ दें आप. सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें. ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन. अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं. एक तरफ नहीं माने, प्लीज. ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं. 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा. 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं. ऐसा नहीं. एक व्यवस्था है. आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे. मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी. आपको when we raised it, the issue again the house was adjourned. Therefore only the whole day the house is adjourned, because we now the all India alliance is united and we are 240 MPs there. Therefore the house could not function. Therefore we all protested, and we asked that Rahul Gandhi ji should be allowed to speak, and other leaders should also be speak on the issue of NEET, because it's a very, very serious issue. The life of the students of India is at danger, and we demanded that the positive discussions should take place in the parliament, and Rahul Gandhi ji, as the leader of opposition, demanded the government is not ready to do it. The Prime Minister Modi ji is not in the parliament, he is not attending the parliament, therefore the parliament was not functioning and house was adjourned till Monday. Rahul Gandhi ji
was raising the NEET issue, who switched off his mobile mic, who allowed the parliament not to function? It is BJP. It is the BJP's plan to not to have discussion on NEET, not to have discussions on the UGC NEET paper leaks, not to have discussions on the NTA's failure as an institution. The education ministry is not coming to the parliament. It's a very serious issue and they are not ready to discuss it in parliament. Shows their arrogance. But we will continue to raise it. And Rahul Gandhi ji as a leader who stood with the people of the students who are there who met with him also, the NEET students. He assured them that he will stand with them. We will continue to raise these issues. ये बहुत दुख का बात है इस देश में राम मंदिर का लीक होना और राम मंदिर का सबस्टैंडर्ड तरीके से लोग जल्दीबाजी में बनाने के लिए इतना करोड़ों रुपए उसका खर्च किया और जबलपुर के एयरपोर्ट का कल गिरना, आज दिल्ली का एयरपोर्ट का गिरना और पूरी दिल्ली पानी का अंदर पानी रोड पे और घरों का अंदर आना और संविधान सदन पार्लियामेंट का अंदर कंप्लीटली बंद हो गया इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे चीज़ हो रही है क्यों से करप्ट एटीट्यूड का ऊपर और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है क्यों ये सारे चीज़ लोगों का 4 लोगों का मौत हो चुका है दिल्ली में और ये सारे चीज़ दिखाती है ये सरकार कंप्लीटली एक तरफ का सिर्फ दिखावट में लग रही है। राम से लेके संविधान भवन तक ये लोग छोड़ा नहीं है कोई भी चीज़ का और ये लोगों का गलत नीतियों का ऊपर गलत कार्यक्रम का ऊपर ये सारी चीज़ हो रहा है। All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please. I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir. I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong. And the government has taken the decision, it is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision till the inquiry is completed. You can't, till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of on the President address. On the President address we can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take sides. But the way in which our all elders, they are all senior leaders, they are all mature leaders.